Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 6? Hopefully all will be fine and studying properly. Okay students, as you know that we have started the chapter light, shadow and reflection from the physics portion. And in the previous lecture I have given you some information about light, and I have given you the introduction of this chapter. Okay, now today we are going to study about the luminous and non-luminous object. Okay students, okay, what is the topic for today? The topic is that luminous and non-luminous objects. Okay, now what are the luminous objects students? Luminous objects are those objects which emit their own light. Okay, those objects which emit their own light are called as the luminous objects. I am repeating, the objects which emit their own light are called as the luminous objects. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट रिलीज़ करते हैं, यानी वो लाइट उनकी अपनी होती है, वो किसी से बोरो नहीं करते, किसी से लेते नहीं हैं, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनकी अपनी लाइट होती है, दे आर कॉल्ड एज द luminous object. फॉर एग्जाम्पल लाइक a sun is the luminous object. Stars are the luminous objects. Okay, lantern, ठीक है, lantern is the luminous object students. Torch, ठीक है, torch is also the example of the luminous object. आपको पता है कि टॉर्च जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, जब लाइट जाती है कभी, तो हम लाइट टॉर्च ही यूज़ कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ luminous objects. Okay, lantern, torch, these all are the examples of luminous objects. And then fireflies. Okay, now what are the fireflies? जुगनू, जुगनू का नाम सुना होगा ना आपने, जिसकी अपनी लाइट होती है, वो चमकता है अंधेरे में, ठीक है, डार्कनेस में चमकता है वो. सो दैट इज़ द these are the fireflies are the luminous objects. Okay, okay, these are few examples of luminous objects like sun, stars, fireflies, torch. Okay, these all are the luminous object. Okay, now let's move towards the non-luminous object. What are the non-luminous objects? Non-luminous objects are opposite of the luminous object. Means luminous object क्या करते हैं? They release their own light, they emit their own light. And non-luminous object, they don't do it. They do not emit their own light. Okay, ठीक है. Non-luminous object कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपनी लाइट को रिलीज़ नहीं करते हैं, इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये क्या करते हैं, शाइन तो करते हैं, ठीक है, शाइन करते हैं, बट दे बोरो द लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स. ये दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं, लाइट लेते हैं, ठीक है, और फिर चमकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक द मून, you know that moon doesn't have any light. Moon doesn't have its own light. When the light of the sun falls over the moon, it will shine. It shines. Okay, when the light of the sun falls over the moon shines. It looks bright. Okay, so moon is the example of the non-luminous object. Okay students, remember it, moon doesn't has its own light. It emits the light by borrowing फ्रॉम द सन. सन की जो लाइट पड़ती है वो लाइट लेके मून जो शाइन करता है. ये वजह है कि डे टाइम में हमें मून नज़र नहीं आता, क्योंकि डे टाइम में जो है मून जो है सन की लाइट में छुप जाता है, वो हमें नज़र नहीं आता है, ठीक है. अच्छा नाउ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल लाइक एज द वॉल, राइट, मेटल्स like as the iron, steel. Okay, plastic material, non-metals like plastic material like chair, ठीक है, that is the example of non-luminous object. अच्छा, wood, tree, right, these all are the non-luminous objects. Okay students, and as the earth is also the non-luminous object. Okay, now students, let's move towards the today's homework. In today's homework, I am going to give you the few question answers about the topic. Okay, please look at your screen. First of all, you will make the title page of this chapter, light, shadow and reflection. Then question number one. Question number one is that define light. Right? What is the definition of light? Light is something that helps us to see objects. It is a definition.
Question number 1b part. It is question number 1a. It's question number 1b part is that what is the speed of light in space? Light travels at a speed of 3 into 10 is power 8 meter per second in space. Okay. Can anything move? Can anything move faster than light? Nothing in the world can move faster in the light. ठीक है, कोई भी चीज़ दुनिया में लाइट से ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकती. ओके स्टूडेंट, so it is all about question number 1. Question number 1 consists on A, B, C parts. So these all are the parts of the question number 1. Question number 1A, 1B, 1C, and you will write the answers neatly in your science journals. Okay students. Okay, now let's move towards the next question. Question number 2. Question number 2 is about the today's topic. The question number 2 is that differentiate between luminous and non-luminous object. Give their examples. ओके, ये डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है. तो आपको पता है कि इसमें हम डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन में कॉलम बना के डिफरेंसेस शो करते हैं. तो यू विल पुट द हेडिंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, then you will write a luminous object emits a light of its own. Examples: sun, stars, fire, torches, lantern, fireflies. Okay. Non-luminous object. A non-luminous object has no light of its own. Examples are earth, moon, tree, e.g. wood, wall, e.g. bricks, ठीक है, metals, e.g. iron, non-metals, e.g. plastic chair. Okay students, so these all are the non-luminous objects. This okay. ये फर्स्ट पॉइंट तो आप दोनों का डेफिनेशन का दे देंगे, और सेकेंड पॉइंट में दोनों की अपनी अपनी जो एग्जांपल्स है वो आप दे देंगे. तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर साइंस जर्नल. वन मोर थिंग दैट प्लीज़ डू कंप्लीट योर वर्क and send your journals for checking to the school. You know that the marks are kept in the exam, in the upcoming exam. The marks will be given to you for the journal work. ठीक है, जर्नल का जो काम है उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे. तो प्लीज़ आप जो है इसकी जो है ना अच्छे से वर्क करके इसको चेकिंग के लिए स्कूल भेजें. एक और चीज़ कि आप जो जिन स्टूडेंट का काम जो है आउटस्टैंडिंग है, अच्छा होगा, बहुत अच्छा काम होगा, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, so please do your work completely.